गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में सीक्वेंस के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, जिसमें हमने सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड करना है, सीक्वेंस का लिम सुप कैसे फाइंड करना है, लिम इंफ कैसे फाइंड करना है, सीक्वेंस का नेचर कैसे डिफाइन करना है, वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है या ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली है, वो सब प्रॉब्लम्स हमने किए थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो जो सब प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सेट्स के प्रॉब्लम है। आपको जो प्रॉब्लम सेट दिया गया है सीक्वेंस का, उसमें जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो प्रॉब्लम सेट में फर्स्ट प्रॉब्लम है वो लिमिट फाइंड करने के प्रॉब्लम्स है, और उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है लिमिट एंड फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स if this limit exists. Number one is limit n tends to infinity. We have to find what? n factorial upon 2 raised to n. Okay, तो ये लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास जो भी टूल्स है उसका यूज करेंगे। हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे और कुछ जो हमारी टेक्निक्स है उसको लेकर चलेंगे। क्या हमारी टेक्निक्स है देखते हैं। तो पहले तो देखा जाए तो यहाँ पर जो लिमिट हमें फाइंड करनी है उसमें क्या है, वो फ्रैक्शनल टाइप की लिमिट है। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी n वाला टर्म है, डिनोमिनेटर में भी n वाला टर्म है। तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड स्लो है, राइट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो दिया गया है n फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में जो दिया गया है वो 2 raised to n है, राइट। ओके, let me call it xn. xn is equal to n factorial upon 2 raised to n. हम जस्ट गेस कर रहे हैं कि अगर हम xn से xn plus 1 में जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर n plus 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पर 2 raised to n plus 1 हो जाएगा, राइट। न्यूमरेटर में n plus 1 फैक्टोरियल होगा, डिनोमिनेटर में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज n plus 1 into n factorial divided by 2 into 2 raised to n, लिख सकते हैं। Yes, it means we can write it like n plus 1 by 2 into xn, right? This is nothing but our xn. So xn plus 1 में जब हम जाते हैं xn से, तो क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो n plus 1 से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है एवरी टाइम। इफ n is very large number, so we can see that न्यूमरेटर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर तो ट्वाइस ही होगा। यहाँ पर सपोज हम x100 से x101 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो टर्म थी उसकी 101 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर तो डबल ही होगा सिर्फ। समझ में आ रहा है। इट मीन्स n फैक्टोरियल की जो स्पीड है वो ज्यादा है, 2 raised to n की स्लो है। मीन्स इसकी स्पीड काम करेगी, और n टेंड्स टू इंफिनिटी करो तो ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका बस चलेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। सो आंसर इज इंफिनिटी। ये हम टेक्निक से जा रहे हैं, गेस वर्क करके कि ऐसा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, राइट। ये दोनों सेम फंक्शन नहीं है, सेम फंक्शन नहीं है, अदरवाइज एक दूसरे की स्पीड को कट कर देंगे। अगर ऐसा है और ऐसे नहीं दिखना है तो हमारे पास टेक्निक भी है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। हमने एक रिजल्ट देखा था, कौन सा रिजल्ट, तो मैं इसको ऐसे देखना चाहूंगा। लेट मी कॉल इट xn. Let xn is equal to n factorial by 2 raised to n. Then what is xn plus 1? Then xn plus 1 is equal to, it is n plus 1 factorial by 2 raised to n. I am going to use this result if limit n tends to infinity, xn plus 1 by xn is equal to L, then number 1, let me call it n, let this is equal to L. Number 1, if L is less than 1, in fact mod L is less than 1, then xn goes to 0, right? And if L is strictly greater than 1, then xn goes to infinity. It means limit of xn is infinity. We have seen this result. We are going to use this. So what will happen here? And therefore, what is limit n tends to infinity xn plus 1 upon xn? This is limit n tends to infinity xn plus 1 is n plus 1 factorial. Here it will be n plus 1
2 raised to n plus 1 divided by xn. So let me write it here. Divided by xn n factorial 2 raised to n. So 2 raised to n upon n factorial. So you can see here, this is nothing but this is limit n tends to infinity. 2 raised to n will get cancelled, and factorial will get cancelled. What you get is n plus 1 by 2, and this goes to infinity. Right? It is greater than 1. If L is greater than 1, then xn goes to infinity. And hence, limit n tends to infinity, xn is infinity. Right? This limit doesn't exist, in other words. Okay. Let us go for number 2. Problem number 2. What is that? Second problem. We have to find this limit. N plus sin n square. Number 2. Evaluate this limit. Limit n tends to infinity. N plus sin of n square divided by n plus cos of n. सिंपल है, देख सकते हैं. What we can see is here, if you take n tends to infinity, this term will go to infinity. This is a bounded function, so you can use infinity by infinity form, L'Hopital rule. Differentiate with respect to n, you will get the limit. Or if you want to go like sequences, then this is limit n tends to infinity. Let us take n common. What we get is sine of n square divided by n, and let me take n common, 1 plus cos of n divided by n. Right? Okay. So this is n and will get cancelled. N tends to infinity है. Sin n by sin theta by theta, theta tends to 0, it will be 1. अगर theta 0 पे जा रहा है तो वो 1 होगा. तो यहाँ पर n square है, तो यहाँ पर n square करने की ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर infinity है. This is a bounded function which is mod is less or equal 1. This is a bounded quantity. This will go to infinity, so this will be 0. So 1 plus 0. Same argument here. Cos n is a bounded function. You will get 1 plus 0. Answer is 1. Yes. Next, number 3. Limit n tends to infinity. You have to find this limit. What is that? 1 minus 1 upon n square. Number 3. Find this limit. Evaluate this limit. Limit n tends to infinity. 1 minus 1 upon n square whole raised to n. Right? Okay. So we know very well known result. Let me just recall you that we know that limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 upon x. 1 प्लस में जो टर्म है वो 0 पर जानी चाहिए, और जो पावर में है यहाँ पर जो है उसका इनवर्स होना चाहिए, मीन्स दिस गोज टू इंफिनिटी, और यहाँ पर जो है उसका इनवर्स होना चाहिए. देन इट विल गो टू e एक्सपोनेंशियली. इसका लिमिट e आएगा. क्या होना चाहिए? वंस अगेन 1 प्लस जो टर्म है वो 0 पर जानी चाहिए, और यहाँ पर जो टर्म है उसका इनवर्स, उसका व्यस्त यहाँ पर होना चाहिए. राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. So here, limit n tends to infinity. I would like to write this as 1 plus something, right? Because we want plus here, so I will write it as minus 1 upon n square raised to n. What we want, compare with this. अगर ऐसा फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर जो है 1 प्लस में जो है उसका इनवर्स पावर में होना चाहिए. So let me make this form. 1 plus minus 1 upon n square raised to, it should be minus n square here, right? Minus 1 upon n square का base. Okay. But we have only n power, so let me put here minus 1 by n, right? So minus minus will be plus, n will get cancelled and you will get n power. I am just arranging the terms or powers, setting to set like this. Okay. अगर इसको आप x बोल दो माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपन एक्स. इसका इनवर्स यहाँ पर आ गया. मीन्स ये जो है e पर जाना चाहता है, तो
दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इसको ई के ऊपर जाना है, यस। लेकिन जैसे ही आप n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो 1 upon infinity will go to 0, right? Minus 0 in fact. So e raised to 0 and answer is 1. This is simple. Okay, अगर यहाँ पर n है, यहाँ पर n स्क्वायर है, तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ये सब लिमिट इवेल्युएट करेंगे, एक्सरसाइज में दे रहा हूँ आपको। यू हैव टू फाइंड दिस लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या फाइंड करना है आपको? 1 plus 1 by n रेज टू माइनस n स्क्वायर क्या आएगा, इसके हिसाब से सेट करना है। यहाँ पर 1 by n है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वो देख लेना। सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1 by n रेज टू n स्क्वायर। सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 upon n स्क्वायर रेज टू n। ये सब इवेल्युएट करना है, राइट? ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अगर दिक्कत है तो आप प्रॉब्लम सेशन में पूछ सकते हैं ये फाइंड करने में। ओके, वी विल गो अहेड। व्हाट इज नेक्स्ट? नंबर 4, व्हाट इज गिवन? We have to find this type of limit, limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, it is 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square raised to 1 by n, right? Okay, 1 square plus 2 square plus 3 square all raised to 1 by n। ये लिमिट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे या क्या करेंगे? यस, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 1 by n है और हम ये रिजल्ट जानते हैं। कौन सा रिजल्ट? हम इसका वी आर गोइंग टू यूज दिस। इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn plus 1 upon xn, if this limit exists then this limit is same as limit n tends to infinity xn raised to 1 by n। ये 1 by n से आइडिया आना चाहिए। So we want to evaluate this limit, so let me call this portion as xn, and if I want to check whether this xn plus 1 upon xn exists or not, so let us take xn is equal to this 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square, right? Then what is xn plus 1? It is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square plus n plus 1 square, right? So limit n tends to infinity xn plus 1 by xn, it will be what? This is equal to limit n tends to infinity 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square plus n plus 1 square. This is xn plus 1 divided by xn. See, this is a polynomial in n square. Maximum power is n square. Here is also n square. Both in numerator and in denominator both have a polynomial of n square. So this limit must be finite. बने दोनों का ऑर्डर सेम है, राइट? डिग्री सेम है। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा होती तो इंफिनिटी तक चला जाता, नीचे की डिग्री ज्यादा होती तो 0 तक चला जाता। ठीक है? ओके, so this is nothing but summation of I square I running from 1 to n plus 1. I can write it like this, right? This is nothing but summation of I square I running from 1 to n, and we know that summation of I square is n by 6, n plus 1 to n plus 1. According to that, here in place of n it is n plus 1, so substitute n plus 1 here, you will get n plus 1 by 6. N plus 1 means 2n plus 1. Substitute n plus 1 here, you will get 2n plus 3, right? We want to evaluate this limit, so this 6 will get cancelled. N plus 1 will also be cancelled, and what we get is this. This is equal to limit n tends to infinity. What we get is, see here it is n plus 2, here it is 2n plus 3. So let me take n common from here, n common from another bracket, so we get n square 1 plus 2 by n. एक n यहाँ से बाहर आएगा, एक n यहाँ से बाहर आएगा. What we get 2 plus, this is 2n plus 3, so it is 2 plus 3 by n, right? Similarly here एक n ऑलरेडी यहाँ पर है,
यहाँ से एक n बाहर निकलेगा, so what we get n square into 2 plus 1 by n square will get cancelled. If you take n tends to infinity, this will be 0, this will be 0, so this is 1 into 2 by 2, so answer is 1. So this limit exists, and therefore this is, I think, Cauchy's second theorem, right? This is what we call is Cauchy's second theorem on limit, right? And therefore, by Cauchy's second theorem on limit n tends to infinity, xn raised to 1 by n is same as limit n tends to infinity, xn plus 1 by n, and this is 1, so this limit is 1. ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको क्या इवेल्युएट करना है. Okay, let's go ahead. Next, number 5, it is given that we have to find this limit, we have to evaluate this limit, and what is given is this. ये सभी प्रॉब्लम्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए. ऐसे नहीं पूछेंगे कि इवेल्युएट दिस लिमिट, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है. तो ऑफ कोर्स हमें ऑप्शन पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्टली लिमिट फाइंड करना है. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon under root n square plus 1 upon under root n square plus 2 plus and so on 1 upon under root n square plus n. This limit we want to find. So let me call this as xn. So let xn is equal to this. We will use sandwich theorem, n square plus n. Then clearly, what is clearly? 0 is less than or equal to xn, or xn is greater or equal to 0. Every term is non-negative, right? For all n, right? And what another thing is, let me remove 1 from here, 2 from here, n from here. मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा हूं. डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हुआ था जो मैंने निकाल दिया, राइट? तो दिस इज 1 upon root n square plus 1 upon root n square plus 1 upon root n square. डिनोमिनेटर डिक्रीज किया तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी, मींस xn से ये क्वांटिटी ज्यादा आएगी. दैट्स व्हाई आई हैव पुट लेस और इक्वल, राइट? एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n. So what we got is 0 is less or equal, xn is less or equal. This is n terms, right? So n times what? Oh, this will not work because n times this means यहाँ पर 1 आएगा ना? Yes, यहाँ पर 1 आ जाएगा. Okay, so we want here also it should be 1, right? Okay. Okay, so no problem. So what I will do is I will put n here. See, this is n square plus 1, n square plus 2 and n square plus n. मैं हर जगह यहाँ 1 की जगह n रिप्लेस करूंगा, 2 की जगह n रिप्लेस करूंगा, n की जगह तो n है ही. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 upon under root n square plus n plus 1 upon under root n square plus n plus up to 1 upon under root n square plus n, right? n times. क्या किया, डिनोमिनेटर थोड़ा बढ़ा दिया. 1 था उसकी जगह n रिप्लेस किया, 2 की जगह n रिप्लेस किया, 3 की जगह n रिप्लेस किया. तो डिनोमिनेटर इंक्रीज किया. डिनोमिनेटर इंक्रीज किया तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी? तो ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होगी. सो xn जो है उससे छोटी होगी, ये वाली इससे बड़ी होगी. तो यहाँ पर हमने क्या मिला, we got this n times under root n square plus n, and here what we got, n times 1 upon under root n square, that is n, right?
and this is true for all n. We want to use sandwich theorem. So let us take limit both the side, and therefore limit n tends to infinity n. Let me take n square common. So n will come out, and what we get is 1 plus 1 upon n. n square square root of n square is n. n बाहर निकलेगा और क्या रहेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि n स्क्वायर कॉमन लिया है. यहाँ पर n upon n square means 1 by n बचेगा. This is simple. This is less or equal xn. This is what? This is 1 by n, right? n times under root of n square is 1 by n. So this is 1. Okay, we are applying limit. So I should write like this. This is limit n tends to infinity xn. Again this is limit n tends to infinity. N will get cancelled and 1. So here n will get cancelled. This limit is nothing but 1. So 1 less or equal this limit n tends to infinity xn is less or equal 1, and therefore by sandwich theorem, this limit n tends to infinity xn, this is 1. दोनों तरफ की लिमिट सेम आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक तरफ 0 है एक तरफ 1 है तो नहीं चलेगा. ऐसा सेट करना है कि दोनों तरफ सेम है, राइट? Okay, let us go for next problem. Next what you have to find is evaluate this limit. Which limit? It is this. Number 6. This is trivial. I think we have already done this. Limit n tends to infinity 1 by n, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by n. We have done this using Cauchy's first theorem of limit. You say this is x1, this is x2. आपको याद होना चाहिए. This is xn. Then this is nothing but what you want to find, x1 plus limit n tends to infinity x1 plus x2 plus x3 plus xn by n. So just find out limit of xn and you will get the answer. So answer is 0. Next, number 6 or 7, we have to evaluate this limit n tends to infinity. What is that? 1 plus 2 raised to 1 by 2 plus 3 raised to 1 by 3 and so on, n raised to 1 by n. This whole quantity is divided by n square plus n plus 7. We want to find this limit. Okay. So let me modify this thing. This is nothing but limit n tends to infinity. We can write it as 1 plus 2 raised to 1 by 2 plus 3 raised to 1 by 3 plus n raised to 1 by n divided by n into n upon n square plus n plus 7, right? If both this limit exists, then we can give separately. Let me call this as an xn, this is yn. If we know that limit of both sequences exists, then limit of product also exists. Now this is something familiar to us. This is what we know, right? So let xn is equal to n raised to 1 by n. Then what is limit of xn? Then limit n tends to infinity xn is 1. N raised to 1 by n limit 1, we have seen that. This, and therefore this is nothing but Cauchy's first theorem, and therefore by Cauchy's first theorem on limit क्या होगा? Limit n tends to infinity x1 plus x2 plus xn by n is also 1, right? What is x1 plus x2 plus xn by n? And therefore limit n tends to infinity x1 is 1, x2 is 2 raised to 1 by 2, xn is n raised to 1 by n divided by n is 1. It means this limit is 1, right? See, here it is a polynomial of degree 1, this is a polynomial of degree 2, so इसका effect होगा, this will go to infinity, so answer, this is similar to 1 by n. इसका nature कैसा होगा? 1 by n type का, and this goes to 0, so this limit will be 0. This is very much simple. You can apply Lapita also.
by taking differentiation. So इसको 1 पर जाना है, इसको 0 पर जाना है, तो finally we know that this will go to 0, right? Yes. What is next one? Number 9. In number 9, you have to evaluate this limit n tends to infinity. What is given? Tan inverse 1 plus 1 by 2 raised to n into tan inverse 1 by 1 plus 1 by 2 raised to n minus 1 into and so on. Last term is tan inverse 1 plus 1 by 2 and this whole quantity raised to 1 by n. We want to find this limit, right? Okay. So how to evaluate this limit? Let a 1 by n हमें help करेगा. Let me call it xn. This is xn minus 1. This is x1. So you can see here it is x1 into x2 into x3 into xn all raised to 1 upon n. So let us take xn is equal to tan inverse 1 plus 1 by 2 raised to n. And therefore what is limit n tends to infinity xn? It is limit n tends to infinity tan inverse 1 plus 1 by 2 raised to n. As n tends to infinity, 1 by 2 raised to n goes to 0. So this is tan inverse 1. And tan inverse 1 is pi by 4. So limit of xn is pi by 4 and hence by second form or another form of Cauchy's first theorem on limit, what we get is limit n tends to infinity x1 into x2 up to xn raised to 1 by n is also same as the limit of xn, and limit of xn is pi by 4. So this limit is pi by 4. Now suppose आपको यहाँ पर दिया गया है 1 by n की जगह ऐसा कुछ 1 अपन से 3n minus 2. तो क्या करना है, क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा. Now this is done, right? This is number 10 we are discussing. n की जगह ऐसा दिया गया है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको. दिस इज सेम एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan inverse 1 plus this into tan inverse 1 plus 1 by 2 raised to n minus 1 and so on. Last term पहले रेस्ट टू 1 by n कर दो, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट हमें पता है 1 by n की. ओके, अब हमने यहाँ पर 1 by n किया तो n पावर p कर दो, n will get cancelled, तो 1 पावर हो गई और हमें चाहिए 3n minus 2, तो यहाँ पर 3n minus 2 कर दो. तो अब क्या हो गया, इसकी लिमिट हमें पता है, अभी हमने देखा कि that is pi by 4. और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो नीचे से n कॉमन आएगा, n will get cancelled and you will get 1 by 3. so your answer is 1 by 3. समझ में आ रहा है? पावर को जस्ट सेट करना है, जिसकी लिमिट हम जानते हैं वैसा सेट कर दो और यहाँ पर पावर एडजस्ट कर दो. देन n टेंड्स टू इंफिनिटी करके पावर की भी लिमिट निकाल लो, क्या आता है, दैट विल बी योर आंसर. Okay, suppose यहाँ पर instead of 1 upon 3n minus 2 you are given 1 upon n square. This is number 11 say. Then what you will do? Same method. Put 1 by n here and 1 by n here. It is 1 by n square. Because we know this limit, so this limit is pi by 4 up to this, right? And again 1 by n is there. So limit n tends to infinity, this will go to pi by 4 raised to 0 and pi by 4 raised to 0 is 1, so its limit is 1. समझ में आ रहा है आपको? तो पावर में ऐसा कोई भी प्रकार का चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है. सपोज यहाँ पर स्क्वायर रूट n दिया गया है, स्क्वायर रूट n दिया गया होगा तो क्या करना है, हम तो यहाँ पर 1 by n ही कर देंगे, लेकिन पावर सेट करने के लिए यहाँ पर रेस्ट टू n पावर करनी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बाय 4
जो इसकी जो अंदर की जो लिमिट है वो पाई बाय 4 आएगी और रेस टू रूट एन है. अब n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो दिस विल गो टू इंफिनिटी. इट मींस दिस इज समथिंग लाइक पाई बाय 4 रेस टू इंफिनिटी. व्हाट इज पाई बाय 4 रेस टू इंफिनिटी? See, this number a raised to n, pi by 4 is less than 1, or any number less than 1 raised to infinity will go to 0. अगर ये नंबर greater than 1 है तो it will be divergent and limit will be infinity. Right? समझ में आ रहा है? These are the simple examples. These are some modifications. So Cauchy's first theorem में भी ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ चेंज किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है. हमें n चाहिए तो n रख दो और बगल में जो है वो एडजस्ट कर दो. n का जो मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, वो सेट कर दो. यू विल गेट द लिमिट. राइट? लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट इट इज गिवन दैट it is a question asked in December 2005. You have to find this limit. This is problem number 2. Limit n tends to infinity. What is given? 1 upon root n into 1 upon root 2 plus root 1 under root 2 plus 1 1 upon root 3 plus root 2 plus up to plus 1 upon under root n plus 1 plus n में भी, और n minus 1 क्या दिया गया है? सॉरी, इवन नंबर से रूट 2 प्लस रूट 4 ऐसा है. रूट 2 प्लस रूट 4 देन रूट 4 प्लस रूट 6 इवन नंबर से सभी. 2n and 2n plus 2 under root 2n plus under root 2n plus 2. Yes, this is asked in December 2015. ऑप्शंस दिया गया है. दिस लिमिट इज स्क्वायर रूट 2, 1 upon square root 2, square root 2 plus 1 and 1 upon square root 2 plus 1. Okay. So again we can do this example in two different methods by two different methods. First method, what I will do is मैं इसको multiply and divide करूँगा. So this is limit n tends to infinity 1 upon square root n as it is. This is root 2 plus root 4. Let me multiply this by root 4 minus root 2 and divide it by root 4 minus root 2. Second term is 1 upon square root 4 plus square root 6. Let me multiply this by square root 6 plus square root 4, square root 6 minus square root 4. Right? And so on. So here what you will get is this is limit n tends to infinity 1 upon square root n, ऊपर रहेगा square root 4 minus square root 2 divided by डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? square root 4 plus square root 2, square root 4 minus square root 2. So a plus b, a minus b, a square minus b square. So 4 minus 2 is 2. Similarly यहाँ पर क्या रहेगा? square root 6 plus square root 2 divided by a minus b, a plus b, a square minus b square. 6 minus 4 is 2 and so on. Last term में क्या आएगा? square root of 2n plus 2, यहाँ पर माइनस आएगा 2n plus 2 minus square root of 2n divided by 2, right? Let me take 2 common. So this is limit n tends to infinity 1 upon 2 square root n, and what we get is here first term will be square root 4 minus square root 2, second term will be square root 6 minus square root 4. Here it is 4, here it is minus, sorry, here it is plus. Okay, minus दोनों जगह, right? Next term will be 4 2 6 4 8 6 and so on, right? So now you can see here plus square root 4 minus square root 4 will get cancelled, plus square root 6 minus square root 6 will get cancelled, plus square root 8 minus square root x will get cancelled.
तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसकी पॉजिटिव टर्म पहले आ रही है, पहले पॉजिटिव आ रही है बाद में नेगेटिव आ रही है, पहले पॉजिटिव आ रही है बाद में नेगेटिव आ रही है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। इसकी नेगेटिव आ गई मींस कि इसकी पॉजिटिव टर्म आगे नहीं होगी कहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। पॉजिटिव तो पहले आनी चाहिए लेकिन पहले कोई टर्म नहीं है तो ये बचेगा, राइट। ओके, ये माइनस स्क्वायर रूट टू एन नेगेटिव टर्म आई, नेगेटिव तो बाद में आ रही, पहले पॉजिटिव आ रही मींस कि यहाँ पर इसकी पॉजिटिव टर्म होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये पॉजिटिव आई, उसकी नेगेटिव तो आगे आएगी लेकिन आगे कोई टर्म है नहीं तो ये बचेगी। तो क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बचेगा अंडर रूट टू एन प्लस टू माइनस रूट टू बचेगा और डिवाइडेड बाय 2 times square root n, right? Let me take square root n common, so this is limit n tends to infinity, square root n common आएगा ऊपर से, यहां से स्क्वायर रूट n निकाल लिया तो क्या बचा, अंडर रूट टू प्लस टू बाय एन, यहाँ तो स्क्वायर रूट n था ही नहीं तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, divided by 2 square root n, square root n will get cancelled. If you take limit n tends to infinity, this will be root 2 minus 0 by 2, so 1 upon root 2 is the answer, right? This is simple method. Okay, another method, second method, we are going to use कोसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कोसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट यूज करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 by n होना चाहिए, x1 plus x2 plus xn by n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रूट n है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n, स्क्वायर रूट n से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, रूट 2 plus रूट 4 स्क्वायर रूट n, रूट 4 plus रूट 6 and so on, स्क्वायर रूट n 2n plus 2. So this is my x1, this is my x2 and this is my xn, right? So let xn is equal to, xn में एक बात ध्यान रखनी है कि स्क्वायर रूट n फिक्स रहेगा, हम डिनोमिनेटर ही चेंज कर रहे हैं। व्हाट इज दैट, स्क्वायर रूट 2n प्लस स्क्वायर रूट 2n plus 2. Okay, so and therefore what is limit n tends to infinity xn? This is limit n tends to infinity, ऊपर स्क्वायर रूट n है, नीचे से स्क्वायर रूट n कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट n कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 2 plus 2 by n, right? This will get cancelled. Just a minute. ये नहीं चलेगा, this is something different. यहाँ पर क्या होगा, आप x1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट n नहीं आएगा। x1 अगर यहाँ पर आप लेते हो x1 n इज इक्वल टू 1 तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए स्क्वायर रूट n आना चाहिए, लेकिन n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 अपन रूट 2 प्लस रूट 4 ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपन रूट 4 प्लस रूट 6 आएगा, सो दिस विल नॉट वर्क। ओके, वी विल गो बाय दिस मेथड ओनली। समझ में आया इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट n आ रहा है हर एक टर्म में, हमें क्या चाहिए, x1 में यहाँ पर 1 चाहिए, x2 में यहाँ पर रूट 2 चाहिए, x3 में यहाँ पर रूट 3 चाहिए और xn में रूट n चाहिए, तो ये चलेगा xn is equal to this. Okay, so don't go by this method, this is simple, we will go by this method only. Okay, next number 3, उसके जैसा ये सिमिलर है, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या दिया गया है, जो सब इवन नंबर थे उसकी जगह ऑड नंबर्स दिया गया है, स्लाइड चेंज करके पूछा गया है और वो पूछा है
जून 14 में इवेल्युएट दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या इवेल्युएट करना है, 1 अपन स्क्वायर रूट n इंटू 1 अपन 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 and so on 1 upon under root 2n minus 4, sorry 2n minus 1 2n plus 1. This is, आप देख सकते हो सिमिलर मेथड से 1 माइनस और रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, ये रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. You have to do this as an exercise. And I think you know the answer. Both have same type of sequences, so answer must be the same. Okay, next number 4 जो सेट में पूछा गया है. सी क्वेश्चन किसी भी तरह पूछे, इवेल्युएट लिमिट करके पूछे या ऑप्शन देके पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. ओके, नंबर 4, it is asked in GSET 2010. What is that? Find this limit. Let x then xn converges to where? Xn is equal to this. What? N square upon square root of n raised to 6 plus 1. N square root of n raised to 6 plus 2. And so on, n square upon square root of n raised to 6 plus 1. This is what we want to find. Okay, simple. We will use what? Sandwich theorem. So here clearly, what is clearly? Xn is greater or equal something, xn is less or equal something. Let us find that something. So first idea is, let me remove this 1, 2, 3 and if I will remove, I am going to decrease. मैं denominator decrease कर रहा हूँ. Denominator decrease होगा तो overall quantity बढ़ेगी. तो यहाँ पर आएगा n square by n raised to 6 plus n square by n raised to 6 plus and so on n square by n raised to 6. Right. So this is n times n square by square root of n raised to 6. This is nothing but n cube by n cube. So this will be 1. ये जो है 1 पर जाना चाहता है. तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हर जगह हम n सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो दिस इज n स्क्वायर बाय n raised to 6 प्लस n. मैं अब डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होगी. राइट. तो ये क्या हो गया, n टाइम्स n स्क्वायर by n raised to 6 plus 1. This is less or equal xn. This is less or equal n times n square by n raised to 6 no square root means n cube. N cube will get cancelled. This is what, नीचे से n cube n raised to 6 कॉमन ले लो, you will get n cube times 1 plus 1 upon n raised to 5 is less or equal xn is less or equal n cube by n cube is 1. This is true for all n. So by taking limit, this is going to be cancelled and this is going to 1, this is going to 1, and therefore limit of xn is equal to 1. Right? Yes. Let's go ahead. Again, same type of question in set 2016, sorry, set 2014. Let me write it here. This is number 5. ये जो हैंडआउट आपको दिया गया है उसमें से मैं लिख रहा हूं, evaluate limit n tends to infinity
n फैक्टोरियल रेस टू 1 बाय n अपन n। कैसे करेंगे सोचो थोड़ी देर, क्या करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर मत जाना। ओके, दिस इज आवर स्क्रीन सेट 14। ओके, सो पॉज करके आप देखना, पहला सोचना अपने हिसाब से क्या करना चाहिए। मैं इसको ऐसे करूंगा, 1/n आ रहा है ना, तो n फैक्टोरियल बाय n रेस टू n बाय n, राइट। सो xn रेस टू 1 बाय n की लिमिट फाइंड करनी है। सो एक तो आप डायरेक्टली देख सकते हो सी, अगर आप इसको xn बोल देते हैं, लेट मी कॉल इट xn, और xn से xn प्लस 1 में आप जाना चाहते हैं, xn से आप xn प्लस 1 में जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, मीन्स इससे n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहाँ पर n ही मल्टीप्लाई होगा, हर बार यहाँ पर n ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर n प्लस सॉरी n प्लस 1 रेस टू n प्लस 1 आएगा ना यहाँ पर, यस। In fact, this is the most powerful, most fastest increasing function, n raised to n, एक्सपोनेंशियल से भी ज्यादा, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, दिस इज फास्टेस्ट। और ये फास्टेस्ट है तो इसकी इफेक्ट होगी, इसकी इफेक्ट होगी, तो ये इंफिनिटी पर जाएगा, तो आंसर विल बी 0। यू कैन सी फ्रॉम हियर ओनली। सो हियर xn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n रेज़ टू n। अब हमें तय करना है कि ये 0 पर क्यों जाएगा। ओके, तो इसकी लिमिट डिसाइड करने के लिए देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn प्लस 1 बाय xn, this is same as limit n tends to infinity xn plus 1 is n plus 1 factorial by n plus 1 raised to n plus 1 into divided by xn, it is this n raised to n by n factorial, right? So this is same as limit n tends to infinity n factorial will get cancelled, यहाँ पर क्या बचेगा, n बचेगा, n raised to n बचेगा, यहाँ से n कॉमन ले लो, you will get n raised to n plus 1 1 plus 1 by n raised to n plus 1, right? यहाँ से भी n कॉमन आएगा, वाओ, दिस इज नॉट गोइंग टू 0, यहाँ से n कॉमन आएगा, n कॉमन आएगा तो n की n प्लस 1 पावर हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय n बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय n की जो n प्लस 1 पावर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 पावर n पावर, राइट। जो n कॉमन आया वो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल, n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, व्हाट यू विल गेट 1 प्लस 1 बाय n रेज़ टू n, सो दिस इज 1 अपॉन e। और अगर xn प्लस 1 अपॉन xn की लिमिट 1 अपॉन e है, देयरफॉर बाय कॉसिस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, बाय कॉसिस second theorem, what we get, limit n tends to infinity xn raised to 1 by n is also 1 upon e, so answer is 1 upon e, not 0, right? yes, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो दिए गए प्रॉब्लम सेट में, वो जाम के क्वेश्चन है, वो आप ट्राई करना, आपसे होना चाहिए, ना हो तो मुझे बोलना, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करते हैं। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो लिमिट, जिसमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे तो जाम का ही है, और दिस हैज बीन आस्क्ड इन जाम, और ऐसा दिया गया, क्या दिया गया, इफ n इज अ सीक्वेंस सच दैट, इफ n is a sequence such that limit n tends to infinity a n minus 1 is equal to l, right? then ये क्या होना चाहिए, क्या limit n tends to infinity a n by n is equal to what? ऑप्शन दिया गया है, 0 होना चाहिए, एल होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, या इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। सी, अगर आप देख सकते हैं तो यहां से आपको दिखना चाहिए, ये लिमिट को भूल जाओ, तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस कॉमन रहता है,
और यू नो दैट सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस स्टार्टिंग में भले ही कॉमन नहीं होगा, दिस इज इन लिमिटिंग सिचुएशन, राइट। तो हम वी नो दैट के सीक्वेंस की अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन रहता है तो उसको हम कैसे सीक्वेंस बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस डी। तो ये कुछ सीक्वेंस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी टाइप की होनी चाहिए जिसका डिफरेंस कॉमन रहता हो। डिफरेंस यहाँ पर l आता है तो मैं यहाँ पर l लिखूंगा, राइट। a इज द फर्स्ट टर्म, this is the simple. What we want to find? n by n, so just divide n by n, so this a by n plus n minus 1 by n into l. Now take limit n tends to infinity. This is common sense, right? So this is limit n tends to infinity. What you get? A by n plus this. Now a is a fixed number. This is starting term, first term of this sequence, arithmetic progression. So this is a fixed number. As you take n tends to infinity, this will go to 0. N minus 1 by n will go to 1. So this is L. You know this. N separate दे दो यहाँ पर. You can write it like this. N को अलग अलग कर दो. So answer should be the L. Okay. This is the common sense के सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस कॉमन रहता है लिमिटिंग सिचुएशन में। स्टार्टिंग में नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, हमें लिमिटिंग सिचुएशन में ही देखना है, लिमिट देखनी है तो। ओके, अनदर मेथड इज दिस इज सिस्टमैटिक सॉल्यूशन। ओके, लेट मी कॉल दिस सीक्वेंस एज bn. Here let bn is equal to n minus 1. I am defining this new sequence using this given sequence for all n. Right. Then it is given that what is given? Limit n tends to infinity, bn is equal to L. This is given, right? And therefore let me apply Cauchy's first theorem because divide by n करना है ना हमें. So by Cauchy's first theorem on limits, what we get is we get limit n tends to infinity 1 by n b1 plus b2 and so on bn. This is also L, right? This limit is also L. So this means this is limit n tends to infinity 1 by n. What is b1? b1 will be b1 minus b0. Sorry, a1 minus a0 because bn is equal to n minus 1. So this is a1 minus a0. Then what is b2? b2 will be a2 minus a1, then a3 minus a2 up to an minus n minus 1. This limit is L. Okay, a1 will get cancelled, a2 will get cancelled, a3 will get cancelled. What will be remaining is only first and last term. So this is limit n tends to infinity 1 by n minus a0 plus n. So an minus a0. This is L. Separate, this is a fixed number, a0 is a fixed number, so limit, you can write it like this, an by n minus a0 by n is equal to L, but this quantity is 0 because a0 is a fixed number, so this will give you limit n tends to infinity, n by n is equal to L. वैसे तो जाम का प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन वेरी नाइस है इसलिए मैंने लिया है। और ये कॉमन सेंस से आप जा सकते हो। सीक्वेंस में जब लिमिटिंग सिचुएशन देखनी है तो आगे क्या होता है फाइनाइटली मेनी टर्म्स में वो भूल जाओ, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग सिचुएशन में क्या होता है उसको संभाल लो क्योंकि आपको एल देखना है, लिमिटिंग सिचुएशन ही देखनी है। फाइनाइटली मेनी टर्म्स में नहीं होता कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, what is next? Number 10, let n be a convergent sequence, then which of the following is convergent? Number 10, this is a very simple question. Let what is given? N be a convergent sequence, n be convergent, then which of the following is convergent?
ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कहना है कि वो कन्वर्जन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन स्क्वायर बी है एन रेस टू वन बाय एन, सी में क्या है समेशन ए, और डी में है स्क्वायर रूट एन। So again, this is simple. N square is nothing but n into n, and we know that if two sequences are convergent, then their pointwise product is also convergent. So n is convergent, n is convergent, so product is convergent. So this is CGT. Simple. N raised to 1 by n may not be convergent. Give me an example. Try to find out an example so that n is convergent, but n raised to 1 by n may not be convergent. So let us take. In fact, you take n is equal to minus 1 constant sequence, then n raised to 1 by n may not be defined. Square root, cube root, negative term ની sequence હોય, अगर आपकी sequence में negative terms आ रही है तो n raised to 1 by n defined नहीं होगी, n even होगा तब, right? Yes, or you can say what? n raised to 1 by n कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा एग्जांपल्स इसमें आप ले सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट सीक्वेंस फॉर ऑल n, 1 plus 1 सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बट समेशन n इज नॉट कन्वर्जेंट ऑफ कोर्स। स्क्वायर रूट n is convergent but square root n may not be convergent. Again sequence involving negative terms, sequence क्योंकि स्क्वायर रूट n डिफाइन ही नहीं होगा तो कन्वर्जन की बात ही नहीं है, इन्वॉल्विंग negative terms, right? So this is not going to be convergent. Okay, next question we will discuss later. 11. Number 12 also we will discuss. We will go to directly number 14. Number 14, if a is equal to this, a is equal to this is given 1 plus limit n tends to infinity 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 and so on 1 by n, and b is equal to limit n tends to infinity 1 by n 1 plus 1 by 2 plus 1 by n. This limit we have already evaluated earlier by Cauchy's first theorem on limit. This is x1, this is x2, this is xn, then x1 plus x2 by xn. The limit is same as limit n tends to infinity xn, and xn goes to 0, right? So this limit is 0. This 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by n, this will go to infinity. This is a series, divergent series, summation 1 upon n. This is divergent and running from 1 to infinity. This you can write as summation 1 by n. This is divergent. So this is infinity, right? ये सिंपल है, कैसे इंफिनिटी तक जाता है वो आप किसी भी रेफरेंस बुक में या डायरेक्टली बता सकते हैं, दो दो की पेयर करके, इन दोनों की अरेंजमेंट करके। अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हमें सीरीज में डिस्कस करेंगे वो कैसे इंफिनिटी तक जाता है, राइट? ओके, नेक्स्ट नंबर 14. What is given? Sorry, 15. 14 we have discussed. Problem number 15 says that what? Let a1 is greater or equal a2 is greater or equal a3 is greater or equal and so on is greater or equal ak is greater or equal 0. Then we have to find this limit. Then limit n tends to infinity a1 plus a2 plus up to ak, sorry, a1 raised to n, ak raised to n, whole raised to 1 by n. This is blank. We have to find this limit. Okay, this options are this does not exist, depends on a1,
is equal to a1 independent of a1. So let us check. क्या करेंगे? Okay. So here a1 raised to n is less or equal a1 raised to n plus a2 raised to n plus ak raised to n, right? Because all these terms are non-negative. an में मैं कुछ यहाँ पर एक ही टर्म रख रहा हूँ, इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ. दिस ये जो है वो तो यहाँ पर है प्लस समथिंग एक्स्ट्रा है, तो दिस विल बी लेस और इक्वल दिस ऑफ कोर्स. And this is less or equal. Let me put a1 in place of a2, a3, ak. a1 is the largest one. a2 से बड़ा है, a3 से भी बड़ा है, ak से भी बड़ा है. तो ये a1 raised to n as it is. a2 की जगह मैं a1 रख रहा. तो इससे बड़ी क्वांटिटी में रिप्लेस कर रहा हूँ, इससे बड़ी क्वांटिटी रिप्लेस कर रहा हूँ, ak से भी बड़ी क्वांटिटी रिप्लेस कर रहा हूँ, right? So this is what a1 raised to n. This is less or equal. This up to ak raised to n. This is less or equal n times a1 raised to n. So take nth root. So a1 raised to n raised to 1 by n will be less or equal a1 raised to n plus up to ak raised to n raised to 1 by n. This is less or equal n a1 raised to n raised to 1 by n, right? And therefore by sandwich theorem, this is nothing but a1. This is a1. This is less or equal this. This is less or equal. This is what? N raised to 1 by n into a1. Right. So this is converges to a1. N raised to 1 by n goes to 1. So finally this whole quantity goes to a1. और दिस इज इन बिटवीन. इसको a1 पर जाना है, इसको a1 पर जाना है, तो ये जो बीच वाला है बाय सैंडविच थ्योरम इट हैज टू गो टू a1. सो दिस लिमिट इज नथिंग बट a1. ओके. नेक्स्ट वन इज लिमिट n tends to infinity 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus up to 1 upon 2n. Okay. Yes, so question number 16 says that limit n tends to infinity 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus n means 2n is equal to blank. See, sometimes हमें एग्जैक्ट लिमिट पता ना हो तो भी हम कुछ जुगाड़ करके लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं. सी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए है इंफिनिटी, बी इज log 2, सी इज 0 एंड डी इज नन. एग्जैक्ट लिमिट पता ना हो तो ऑप्शन पर के हिसाब से भी जा सकते हैं. देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे. हियर let me call this as an xn. xn is equal to 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus n is 2n. Then let us just estimate this. xn will be greater or equal something, less or equal something. Let me put n here. In place of 1 I am putting n, means डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, ओवरऑल क्वांटिटी घटेगी. सो 1 upon n plus n. 2 की जगह भी n रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 upon n plus n and so on. हर जगह मैंने n रिप्लेस कर दिया. ओके, ये 1 अब निकाल रहा हूँ, तो 1 by n 1 by n 1 by n. क्या किया, यहाँ से 1 निकाल दिया तो डिनोमिनेटर डिक्रीज किया तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी ओरिजिनल से. सो xn से बड़ा आएगा सभी जगह. यहाँ पर 2n मीन्स n plus n है, एक n निकाल दिया तो ये क्या हो गया, n times 1 upon 2n is less or equal xn is less or equal n times 1 by n. It means n cancel, 1 by 2 less or equal xn less or equal 1 for all n. It means इसकी जो लिमिट आएगी वो 1 by 2 and 1 के बीच आएगी. Means it cannot go to infinity, it cannot go to 0, right? And if this is a bounded sequence, we can see that
it has to be convergent, so it will go to log 2 only. So this limit is log 2. We don't have any other option. नन नहीं आएगा, उसकी लिमिट आएगी, राइट? ओके, एग्जैक्टली log 2 ही कैसे आएगा वो हम सीरीज देखेंगे तब डिस्कस करेंगे. उसके हिसाब से वी कैन इवेल्युएट दिस log 2. नेक्स्ट वन इज limit n tends to infinity cos pi by 2 square pi by 2 cube cos pi by 2 raised to n and so on. Okay, let's evaluate this. 17. What is given? You have to evaluate this limit. Limit n tends to infinity. What? Cos pi by 2 raised to n, pi by 2 raised to n minus 1 and so on. Cos pi by 2 square is equal to blank. क्या करेंगे इसमें? ओके, देखिए सिंपल है, क्या करना है. ये जो दिया गया है cos pi by 2 raised to n, cos pi by 2 raised to n minus 1 into up to cos pi by 2 square, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 2 sin pi by 2 raised to n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 2 sin pi by 2 raised to n से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट? ये टर्म मैंने ऐड की, डिवाइड की, ये इट इज. तो ये जो हो गया 2 sin थीटा into cos थीटा, इट विल बी sin 2 थीटा एंड 2 थीटा विल बी pi by 2 raised to n minus 1, राइट? यहाँ से cos pi by 2 raised to n minus 1 है ये सब. ओके, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा. अगेन 2 sin थीटा into cos थीटा, इट विल बी sin 2 थीटा, सो दिस विल बी sin pi by 2 raised to n minus 2 into next term will be cos pi by 2 raised to n minus 2 up to cos pi by 2 square divided by 2 square sin pi by 2 raised to n. अगर इसको फॉर्मूला बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 क्यूब आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन. तो आप देख लीजिएगा क्या आता है, ठीक है. आई थिंक साइन पाई बाई 2 लास्ट टर्म आएगा 2 sin pi by 2 square into cos pi by 2 square, तो वो हो जाएगा sin pi by 2, राइट? ऊपर हो जाएगा sin pi by 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 raised to n sin pi by 2 raised to n. देख लेना डिफरेंस, पावर 1 का डिफरेंस आता है या सेम आता है. और अगर सेम आता है तो यू कैन इवेल्युएट दिस लिमिट, इसको डिनोमिनेटर में जाने दो. तो ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपन sin pi by 2 raised to n divided by pi by 2 raised to n into pi, right? 2 raised to n को नीचे जाने देना है. Now as you take n tends to infinity, this will be sin theta by theta, it will become 1 and I think 1 upon pi it should be और इक्विवेलेंट. n की पावर देख लेना, अगर चेंज करना है तो यहाँ पर 2 raised to n minus 1 आ रहा होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 upon pi भी आ सकता है. क्या ऑप्शन है देखते हैं. यस, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं. यहाँ से आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और जो थियोरेटिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेट्स स्टॉप हियर.